students. In previous video, we have seen the activity sheet based on the Indian weavers. Now, in this video, we will see appreciation of poem. This question carries 4 marks. यह क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है जहाँ पे 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा. Now some points are given about the poem, poet and title. Indian Weaver is a poem by renowned poet Sarojini Naidu. The title of Nightingale of India was bestowed upon her for her immense literary contribution. This poem has been taken from the poet's first volume poetry, The Golden Threshold, published in 1905. In this poem, the poet highlights the craftsmanship of weavers and blends the colors and clothes with different stages of life. यह इंडियन वीवर जो पोएम है कवियत्री सरोजिनी नायडू ने लिखी हुई है. उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला गया है. यह कविता उनके पोएट्री का जो वॉल्यूम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड यहाँ से ली गई है, जहाँ पे कवियत्री ने बुनकरों के बारे में जानकारी देते हुए उनके विविध प्रकार के कपड़े की बुनाई तथा ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है. देन नेक्स्ट इज theme. Indian Weaver is a short poem where the poet talks about 3 different types of garments that the weavers weave at 3 particular types of a day. Each stanza of the poem represents the different stages of human life. Birth, that is childhood, adulthood, that is young, and death, that is old. The colors mentioned in the stanzas are very significant as the poet indicate the moods relate to the events. The poet chooses 3 different time settings. So Indian Weaver ये एक शॉर्ट पोएम है. यहाँ पे कवियत्री ने 3 प्रकार के वस्त्र निर्माण के बारे में बात की हुई है. ये वस्त्र निर्माण के समय कवियत्री वो वस्त्र निर्माण को जिंदगी के 3 पड़ाव के साथ में जोड़ती है, जैसे कि बर्थ, दैट मीन्स बचपना, एडल्टहुड, दैट मीन्स यंग एज, and death, that is old age. The poet chooses 3 different time settings. The weavers weave the newborn garments in the early morning, the queen's marriage well in the evening, and the dead man's shroud at midnight. The poet beautifully draws 3 parts of the weaver's workday and 3 stages of human life. साथ ही कवियत्री ने जो गारमेंट्स की बुनाई होती है उसका समय भी अलग अलग बताया है, ये दर्शाने के लिए कि ज़िंदगी के पड़ाव भी अलग अलग होते हैं. जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी का गारमेंट अर्ली इन द मॉर्निंग में बुना गया है. क्वीन का मैरिज वेल जो गाउन है वो इवनिंग मीन्स शाम के समय बुना गया है. और जैसे ही ज़िंदगी का तीसरा पड़ाव आता है जिसको कि बुढ़ापा बोलते हैं या डेथ होती है जिस समय, वो पड़ाव में जो श्राउड बुना जाता है उसका समय उन्होंने मूनलाइट चिल, दैट इज़ द मिडनाइट दिया हुआ है. नाउ सी द पोएटिक स्टाइल, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट. द स्टाइल यूज्ड इन द पोएम इज सिंपल एंड lucid. Each stanza begins with a question to evoke the reader's interest. The stanza follows the rhyme scheme AABB, CCDD and EEFF रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे पोएटिक स्टाइल जो है, राइमिंग स्कीम जो है वो AABB थ्रू आउट द स्टांजा यूज हुई है. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. द पोएट हैज़ यूज्ड द पोएटिक डिवाइसेस लाइक एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली टू ब्यूटिफाई द पोएम. पोएट हैज़ यूज्ड सिमिली इन ब्लू एज द विंग्स ऑफ हेलिसियन वर्ल्ड, एलिट्रेशन इन वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ अ डे, and use of repetition in white as feathers, white as a cloud. फिगर्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे. द पोएट हैज़ यूज्ड विविड इमेजरीज, दैट इज इमेजेस, इन कोरिलेटिंग द पार्ट्स ऑफ डे टू द स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि उन्होंने इमेजेस को डिफरेंट स्टेजेस के साथ में जोड़ दिया है. इमेजेस लाइक वीवर्स व्यू, ब्लू कलर्ड रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन, moonlight chill, white as clouds, dead man's funeral shroud, Halcyon wild, plumes of peacock, etc. इत्यादि इमेजेस जो है
वो रीडर्स के माइंड में पिक्चर्स तैयार करती है। देन पोएट हैज़ यूज्ड फ्रेजेस लाइक ब्रेक ऑफ डे रेफरिंग द अर्ली मॉर्निंग, एट फॉल ऑफ नाइट रेफर्ड लेट in the evening, and in the moonlight chill, which means cold night. All these phrases reveals different times of day. यह सब different times बताते हैं. Poet also uses different colors to reveal different phase of life. Like blue color, it stands for newborn or childhood phase. Purple and green color referred young or adulthood phase, and which is full of innovation, while white color reveals old age or death, where person is free from all responsibilities and wish to live a peaceful life. हर कलर हर फेस जिंदगी की दर्शाता है, जैसे कि ब्लू कलर न्यूबॉर्न, पर्पल और ग्रीन कलर यंग एज दर्शाता है, वाइट कलर ओल्ड एज और डेथ दर्शाता है, जहाँ पे व्यक्ति को पीसफुल लाइफ जीनी होती है. Next point is message value morals. The poem conveys a perpetual or everlasting motion of life, where each stage is characterized by its unique emotion which lasts for a while before the next one comes along to take its place. Last point is your opinion about the poem. I find this poem a good read as it is a short poem full of imagery, color scheme, highlighting the different stage of life. It also suggests us to accept life as its joy and sorrows and also focuses on dignity of labor. So यह पोएम मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें लाइफ को जैसी है वैसे उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है. वैसे ही बुनकरों का जो लेबर है, हार्ड वर्क है, उनके बारे में भी जानकारी दी है. लाइफ के 3 अलग अलग पड़ाव के बारे में